Hello everyone, welcome to Genex Academy and welcome to the Polity classes. Ajira amara topic hochi fundamental rights part 1. Part 1 kon pai ame seta discuss kariba. There are different categories of fundamental rights. Basically 6 categories. Six categories achi fundamental rights ra. What are the 6 categories? First, equality. Second is freedom. Third is exploitation. Fourth is religion. Fifth hoche minorities. And finally, sixth hoche constitutional remedies. Constitutional remedies. Okay, so chhota categories achi fundamental rights ro under the Constitution of India. First hochi rights for equality, rights for freedom, tapore rights against exploitation, then rights to profess any religion, tapore rights for the minorities, and finally rights regarding constitutional remedies. ओके तो आज हमें पार्ट 1 रे ए फर्स्ट पढ़िबा राइट्स विथ रिगार्ड्स टू इक्वालिटी आ इक्वालिटी रो राइट्स हमरो कोठो आसुची माने को आर्टिकल रे अछि इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी इज डिस्कस्ड अंडर Article 14 to 18. Okay, the equality is under 14 to 18. Total fundamental rights achi amaro Article 14 to 35. Okay, बाकी नेक्स्ट ओडागो हमें नेक्स्ट पार्ट्स रे पढ़िबा आज हमें इक्वालिटी विषय रे पढ़िबा व्हिच इज Article 14 to 18. Let's start. Article 14. First hochi Article 14 which is equality before law. Article 14 रो heading पढ़ी कि तमने कौन बुझी पारछो equality before law. Obviously the basic statement, the basic meaning is everyone is equal before the law. माने समस्तों पाई law same without any discrimination. एटा होची basic understanding, basic meaning. एबे ओके एबे मु कहूची आर्टिकल 14 रो दीटा अलग अलग पार्ट और दीटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली फर्स्ट मु जोडा कहिली इक्वालिटी बिफोर लॉ सेकंड इक्वल protection of laws. Okay, data अलग अलग interpretation Article 14 रो equality before law, equal protection of laws. Equality before law simple जोटा मु कहली everyone is equal before the laws
law is same for all. Supremacy of law. Supremacy of law माने कौन? Supremacy of law माने no one is above the law. First law is superior, बाकी समस्ते ता तले. तो supremacy of law. A theory टा as you all know कि Indian Constitution हमें various parts रू borrow करिचु, various countries रू Constitution हमें टिके करिकी Indian Constitution बनेइचु. तो ए जिनसटा हमें कोठु बोरो करिचु? यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करिचु. बाकी जिनस हमें मोस्टली यूएस रो करिचु, बट ए थ्योरी टा हमें यूके रो बोरो करिचु. एंड from the theory of a person named as A.V. Dicey. A.V. Dicey is the person जे ए थ्योरी टा देइथिले कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और लॉ इज अबव एवरीवन. ए थ्योरी टा हमें A.V. Dicey रू नेचु और यूके रू बोरो करिचु. आई होप ए पार्ट टा क्लियर हे गला. इक्वालिटी बिफोर लॉ कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. Law is same for all and there is a supremacy of law and nobody is above the law. Next, then what is equal protection of laws? Equal protection of laws रे आमे कथा होचु natural justice विषय रे. What is natural justice? Now गोटे पटे आमे कहि देलु कि समस्तंक भाई law same आउ माने कहा पे किछि डिस्क्रिमिनेशन हबनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जो लोअर कास्ट पाई कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे जो रिजर्वेशंस होची विमेन पाई विमेन कैटेगरीज रे जॉब्स रे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे जोठी रिजर्वेशन होची. व्हाट अबाउट दैट? सेटा केमिति होची? सेटा या अंडर रे होची दैट कि स्टेट पाखरे पावर अच्छी. Parliament can make such laws which will allow the state to make certain laws to follow the principle of natural justice. And what is natural justice? कि ठीक अच्छे किसी गोटे law रे लिखा है जी Parliament law बने जी, that is fine. But what is right for the society? Morally society पाई कौन ठीक सेटा होची natural justice कि एक्चुअली कौन हबा कथा. जस्ट बिकॉज गोटे लॉ लिखा है जी हम सेटा ब्लाइंडली फॉलो करि परिबनी. हां हमें लॉ फॉलो करिबा बट अगेन हमें मॉरल्स भी छाड़ी परिबनी. सो दैट इज नेचुरल जस्टिस. आउ एथे हमरा आसुची हां दिस विल इंक्लूड कि स्टेट हैज द पावर टू मेक स्पेशल लॉज, reservations and special provisions for children, women, OBCs, OBC, SCs, STs and socially and educationally backward classes, etc. So special provisions for women, children, OBC, SC, ST, etc. So equal protection of law brings in the concept of equity. So this is equality. This is equity. Now, what is the difference between equality and equity? Equality माने बुझी पारुछो समस्ते कि समस्तंक पाई सेम फॉर ऑल. इक्वालिटी रो सिंपल मीनिंग कि समस्तंक पाई इक्वल सेम सेटा कहा पाई भी चेंज हबनी. दैट इज इक्वालिटी. नाउ व्हाट इज इक्विटी? जोटा हमें कथा हेले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सेथरे इक्विटी माने कोन? इक्विटी मींस
किए केतिकी कहा पई केतिकी दरकार समस्त सेम रखिबा सेटा अलगा जिंस बट समस्त को सेम जिंस दरकार कि ना कहा को अधिका दरकार कहा को कम दरकार से हिसाब रे प्रोवाइड करिबा सपोज गोटे सिंपल एग्जांपल दोछि पर्सन ए एंड पर्सन बी हाँ पर्सन ए जणे अछि सी 3 दिन हेलानी किछि खाइनी ठीक अछि starving since 3 days starving माने भूखिला अछि ओके पर्सन ए is starving since 3 days पर्सन बी जे अछि he has been eating a lot since 3 days देखो दीटा सिचुएशन पर्सन ए से 3 दिन हलानी किछि खाइनी वेयर एज पर्सन बी 3 दिन हलानी बहुत खाउची लाइक तार जति की कैपेसिटी से तार बहुत अधिक खाउची तो डे 4 रे काहा को खाइबा को देले से खाई परिबो डे 4 रे पर्सन बी आ खाई परिबो ना खाई परिबोनी बिकॉज़ 3 दिन हलानी से बहुत खाई चलची बट पर्सन ए जे कि 3 दिन हलानी भूखिला अछि ऑब्वियसली डे 4 रे ताकू खाइबा दरकार सो दिस इज व्हाट इज इक्विटी कि गोटे मनीष पाखरे जो जिंसर दरकार नाही जोटा ऑलरेडी ता पाखरे अछि ताकू से जिंसटा अधिका अधिका दबा टू बेटर कि जहा पाखरे से गोटे जिंस कम अछि कि जहा को बेसी नीड अछि ताकू हमें से जिंसटा प्रोवाइड करिबा दैट इज इक्विटी कि proportionally divide करिबा जहा को जेति की जोटा दरकार सेति की प्रोवाइड करिबा that is equity okay I hope you have understood this also article 14 रे equity under रे आउरी concepts आसिला further जोटा की non arbitrariness मु लेखि दउछि तापरे गोटे गोटे कहिबी नॉन आर्बिट्रीनेस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया reasonable nexus ए तीनटा जिंसर मीनिंग कोन ठीक अछि आर्टिकल 14 रे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज रे स्टेट को पावर मिलिला कि सर्टेन कैटेगरीज पाई विमेन चिल्ड्रन लोअर कास्ट जोड़ा भी सर्टेन कैटेगरीज पाई स्पेशल लॉज स्पेशल प्रोविजन स्टेट बनै परिबो बट सेतरे केतेटा जिंस नेसेसरी केतेटा कंडीशंस फॉलो करबा को पड़िबो स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी जोड़ा भी हायर अथॉरिटी नॉन आर्बिट्रेरीनेस माने सेथिरे से अथॉरिटी रो कि स्टेट रो निजर किछि इंटरेस्ट नथिबा को पड़िबो कि स्टेट रो सेटा आर्बिट्रेरीनेस हबो माने इच्छा हला जस्ट बिकॉज़ स्टेट रो किछि अथॉरिटी रो इच्छा हला जेमिति सपोज आजिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे डोनेशंस ने कि एडमिशंस होची दैट इज आर्बिट्रेरीनेस कि जस्ट बिकॉज़ यू आर गेटिंग मनी तमे काहू एडमिशन दे दोजो वेयर इज आउ जण को जोठी दरकार अछि एडमिशन रो ताकू मिलुनी एडमिशन तो देयर शुड बी नॉन आर्बिट्रेरीनेस सेकंड इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया व्हाट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जदी डिफरेंशिएशन होची डिस्क्रिमिनेशन होची जोटा म कहिली जदी स्टेट की एनी अदर अथॉरिटी गोटे डिस्क्रिमिनेशन करूची कि डिफरेंशिएशन करूची सेइथिरे माने सेटा एमिति ही किछि भी कर दे सेटा पे प्रॉपर रीजन दबा पे पड़िबो दीस टू आर रिलेटेड सी रीजनेबल नेक्सस एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की difference this difference should be done intelligently or
with a lot of thinking, बहुत भाबी चिंती कि से डिस्क्रिमिनेशन टा करो, डिफरेंशिएशन टा करो, आउ जो डिफरेंशिएशन करूच सेति पे गोटे प्रॉपर रीजन दियो, देयर शुड बी अ रीजनेबल नेक्सस, नेक्सस माने कनेक्शन, तो ये जो डिफरेंस टा करूच सेतिरे गोटे प्रॉपर रीजन दियो, गोटे कनेक्शन थिबा दरकार, तमरो रीजन रे तुम गोटे डिस्क्रिमिनेशन करि देलो, तुम जनकू स्पेशल कोटा रे सपोज जॉब देलो, एडमिशन देलो, जहा भी करलो, आ तुम रीजन जेते बेले तुमको पचरा होउची तुम सेटा क्लियरली कहि पारुनो, तो दैट इज रॉन्ग अंडर आर्टिकल 14। तुमको क्लियरली ए डिफरेंशिएशन और ए रीजन एक्सप्लेन करबा को पड़िबो, कहिबा को पड़िबो को बेसिस रे तुम डिफरेंशिएशन की डिस्क्रिमिनेशन करूछ। ओके, so these are the two concepts of article 14, equality and equity. Equality comes from the heading itself, equality before law, and equity comes from equal protection of law, जोड़ा कि जहा को जेति की प्रोटेक्शन दरकार से हिसाब रे दबा कथा, से हिसाब रे लॉस बनेबा कथा। ओके, दिस इज योर आर्टिकल 14। I hope केडा तमन को बुझा पड़िला। You can take a screenshot of it. I will give you a minute. Okay, let's move on to the next article. Article 15. So under the concept of equality, under the concept of equality there is article 15. Article 15 कौन कहूची? Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. पांचटा ग्राउंड अच्छी आर्टिकल 15 रे, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, पांचटा ग्राउंड अच्छे आर्टिकल 15 रे, जो पांचटा ग्राउंड रो बेसिस रे आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करूची स्टेट को कि एनी अदर सिटीजन or any other authority within the state or within the territory of India कि तमे ए ग्राउंड्स बेसिस रे कहा सहित डिस्क्रिमिनेशन करि पारिबनी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जनरल क्लॉज तमरो बेसिक रूल जोटा मु कहली सिंपली जोटा हेडिंग देछि नो डिस्क्रिमिनेशन, on the grounds of the following. पांचटा ग्राउंड अच्छी डिस्क्रिमिनेशन करि परिबनी, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिंपली सेटा ही कहूची। ओके, क्लॉज 2, क्लॉज 2 एटा कहूची कि within the territory of India, within the territory of the state, state माने हमें यूजुअली कंट्री को रिफर करूचु, तो within the state जहां भी पब्लिक प्लेसेस अच्छी, पब्लिक प्लेसेस जेमिति कि शॉप्स, होटल्स कि सर्टेन लाइक यूटिलिटीज जेमिति कि वेल्स,
टैंक्स एक्सेट्रा जहाँ भी पब्लिक यूज पाई अच्छी विद इन द टेरिटरी शॉप हो पार्क्स हो होटल्स हो वेल्स हो टैंक हो से जगारे किए कहा प्रोहिबिट करि पारिबनी माने गोटे जदि सपोज गोटे शॉप अच्छी किए कहा एटा कहि पारिबनी कि मु से शॉप रु ग्रोसरी किणुची तो आउ किए जाई सेठू किणी पारिबनी सेठू खाली मु किणीबी सेटा हबनी दैट इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 15 कि ऑल द पब्लिक प्लेसेस माने कोन अवेलेबल टू द होल पब्लिक तो सेइथिरे भी किछि डिस्क्रिमिनेशन हबा कथा नाही ओके नाउ दीज टू आर जनरल क्लॉजेस Article 15 under these two are general clauses. I hope you have understood this. Let's move on to the exceptions. Clause 3 रू exception start होची कौन exceptions ना state पाखरे power अच्छी state has the power to make special provisions कहाँ पाई for socially and educationally backward classes, SCBC, scheduled caste, scheduled tribes. जहाँ भी लोअर कास्ट अच्छी कि लोअर कास्ट पर्सन्स अच्छंती सेमानंक पई स्टेट हैज द पावर टू डिस्क्रिमिनेट और टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सच पर्सन्स special provisions with regards to suppose reservations in jobs or educational institutions and etc. Okay, so clause 3 exception दोची state को to कि state has the power कि से special provisions बने पारिबो lower caste लोक मानंको पाई. Now clause 4 क्लॉज 4 तमर कौन कहूची क्लॉज 4 कहूची अगेन क्लॉज 4 भी अच्छा एथरे तमर इंक्लूडेड अछि लोअर कास्ट एंड आल्सो विमेन एंड चिल्ड्रन हां विमेन एंड चिल्ड्रन स्टेट पाखरे पावर अछि दिस इज बोथ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 3 तो क्लॉज 4 और क्लॉज 3 मिसी के एटा कहउचंती कि स्टेट पाखरे पावर अछि कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनै पारिबो कहा कहा पाई विमेन और चिल्ड्रन पाई नहले लोअर कास्ट पर्सन्स पाई जो माने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कि सोशल शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब etc. This is your clause 4 and clause 3 and clause 4 of article 15. Now clause 3 clause 4 हे गला clause 5 को जीवा clause 5 तमरो कोन कहूची clause 3 और 4 तमरो जनरली कहउतले कि reservations etc. state करि पारिबो special provisions बनै पारिबो क्लॉज 5 तमरो कहूची कि reservations within educational institutions ओके सेडा नॉर्मल स्पेशल प्रोविजंस कथा हमें हेले क्लॉज 3 और 4 रे 8 ही होची reservations within the educational institutions for again SCBCs
socially and educationally backward classes, SCs and STs, जोटा कि हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे सेमानक पई केति की गोटे रिजर्वेशन थाए केति की परसेंट, and again this can be done by the state or the university itself, and को यूनिवर्सिटी रे हेई पारिबो when a university under its own statute, माने यूनिवर्सिटी रो निजर गोटे मेमोरेंडम थिबो, जतबे यूनिवर्सिटी बना हबो तार गोटे मेमोरेंडम थिबो, तार स्टैट्यूट थिबो, तो यूनिवर्सिटी अंडर इट्स ओन स्टैट्यूट हैज मेंशनड कि केतेटा पर्टिकुलर सीट से रिजर्व करके रखिबो केतेटा पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स पाए. ओके, this is your clause 5 की reservation within the education a co-educational institution. This will also be applicable to private universities. Co-universities either under the state माने government जोड़ा government universities either under the state or private, also applicable to private educational institutions either aided or unaided by state. Aided or unaided by state माने होची aided माने like somewhat in collaboration, माने completely private नहीं, state आउ गोटे private entity मिसी की गोटे university बनैछन्ती, that is aided कि state support करछि, aid रो माने कोन providing support, or unaided कि completely ही private अछि. जहाँ भी थाओ this provision is applicable to all of these institutions. Okay, next clause 6. clause 6 तमरो लास्ट रे कोन कहूची आर्टिकल 15 रे. अच्छा, आमे क्लॉज 3, 4 एंड 5 रे आमे देखिले SCBC, SCs, STs कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होची कि स्टेट पाखरे पावर अछि स्पेशल प्रोविजन करे पे. क्लॉज 6 कहूची इवन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, economically backward classes, इकोनॉमिकली माने फाइनेंशियली जो माने जरूरी नहीं कि तमे लोअर कास्ट को बिलोंग करूच बट तुम पाखे से फाइनेंसेस नहीं, तमरो स्कोर्स अच्छी, मार्क्स अच्छी, टैलेंट अच्छी, गोटे थांती ना एमती स्टूडेंट जो मानकर टैलेंट थाए जो माने पढ़ी पारिबे बट फाइनेंशियल सपोर्ट न थाए से मानक पाखरे, तो एमानक पाई भी स्टेट हैज द पावर अगेन or the university within the educational institutes to make reservations कितनी 10% of reservations within the university or within the college economically backward classes पाई economically backward classes पाई 10% reservation. जोड़ा caste based reservation, जोड़ा caste based reservation हमें देखी थिले that is 50%, और जोड़ा इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन that is 10%. एटा एक्स्ट्रा 10% माने जदि 50% तो अच्छी है अच्छी, दिस इज एक्स्ट्रा बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन. एबे
मु शॉर्ट रे आउ थरे आर्टिकल 15 रो सब क्लॉजेस कहि दउची क्लॉज 1 तमरो जनरली कहूची नो डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज 2 तमरो कहूची पब्लिक प्लेसेस कथा क्लॉज 3 तमरो कहूची स्टेट पाखरे पावर अच्छी खाली वर्ड्स लिखी दउची मु कीवर्ड्स special provisions करबे with regards to reservation or anything like for the advancement of माने development or advancement कहारो SC BC SC or ST okay this is clause 3 clause 4 तमरो कोन कहूची okay sorry this is clause 4 clause 3 तमरो actually कथा होची special provisions by state for women and children मुझे तड़ कहिथिली ना क्लॉज 3 और क्लॉज 4 मिसी की स्पेशल प्रोविजंस कथा होचन तो क्लॉज 3 विमेन और चिल्ड्रन कथा कहूची क्लॉज 4 तमरो स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एससीबीसी एससी और एसटी ओके और दीटा जागो किए करूची स्टेट पाखरे पावर अछि ओके clause 5 reservation in educational institutes okay for same emanango pai SCBC STs and SCs this is clause 5 and finally clause 6 तमरो कोन कहूची reservation for economically weaker sections EWS economically weaker sections of people कितने 10% reservation in educational institutes okay तो caste based reservation जो state करूची that is 50% और economically weaker by 10% reservation education institute so this is your article 15 prohibition of discrimination grounds of religion race caste sex or place of birth edita general provisions a clause 3 to clause 6 tomorrow exceptions okay I hope you have understood article 15 तो माने जदि चाहू छ यार गोटे स्क्रीनशॉट नै परिबो okay let's move on article 16 article 16 article 15 to be टिके बड़ो like बड़ो नहीं like it's like a better word जदि मु कहिबी माने आ टिके अधिक बुझीबा को पड़िबो तो article 16 basically कहूची equality of opportunity in matters of public employment okay first clause article 16 रो public employment रे again general clause
कि नो डिस्क्रिमिनेशन कहा पाई भी फॉर एनी पर्सन किछि भी डिस्क्रिमिनेशन हबनी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट माने कौन? पब्लिक सर्विसेस जोटा डायरेक्टली अंडर स्टेट आसे गवर्नमेंट जॉब्स जोटा हमें कहू एथिरे नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर. समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दबा पाई पड़िबो. एंड स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी केमिति प्रोवाइड करिबो? केमिति हुए जनरली बाय मीन्स ऑफ नोटिफिकेशन कि गोटे नोटिफिकेशन आसे कि किछि गोटे जॉब पाई वैकेंसी अछि कि वैकेंसी आसुची गोटे एग्जाम हबो तो नोटिफिकेशन समस्त पाई आसे. सो नोटिफिकेशन एमती किछि लेखा ही न था कि ए लोक माने ही अप्लाई करि परिबे कि ए लोक माने करि परिबेनी. तो नोटिफिकेशन एग्जाम्स जोटा स्टेट कराए तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. क्लॉज 2 तापरे कहे कि को ग्राउंड्स रे आमे डिस्क्रिमिनेशन करिबानी. जेमिति आर्टिकल 15 रे 5टा ग्राउंड थिला डिस्क्रिमिनेशन रो एथिरे 7टा ग्राउंड अछि. 7टा ग्राउंड कोन? आर्टिकल 15 रो 5टा ग्राउंड सेम रहिबो. रिलीजन, race, okay, sorry, religion, race, sex, मोटा आउथरे कहि दउछि गोटे मिनिट. क्लॉज 2 विषय हम कथा होतले 7टा ग्राउंड जोटा हम कहिली. 7टा ग्राउंड होछि तमरो religion, race, sex, caste and place of birth. या छड़ा आउ डेटा ग्राउंड अछि आर्टिकल 16 रे residence and descent. रेसिडेंस माने कौन कि तमे कोठी रहूच तो स्टेट एमिति किछि भी काहा को कहि परिबोनी डिस्क्रिमिनेशन करि परिबोनी कि जदी नागपुर रे गोटे जॉब वैकेंसी आसीची कि जॉब रो नोटिफिकेशन आसीची तो मध्य प्रदेश जो माने रहूचने से माने अप्लाई करि परिबेनी. सेमिति काहा सहित डिस्क्रिमिनेशन करा हे परिबोनी. एंड व्हाट इज डिसेंट? डिसेंट माने होची नेशनलिटी. सपोज गोटे लोक अछि जे कि एंग्लो इंडियन तो तारो नेशनलिटी मे बी सीए सिटीजन ऑफ इंडिया, सी इंडिया रो गोटे सिटीजन बट मे बी तारो नेशनलिटी अलगा. तो से बेसिस रे भी until unless the person is a citizen of India आमे कहा सहित डिस्क्रिमिनेशन करि पारिबानी. ओके. सो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 अगेन तमरो जनरल क्लॉजेस. Let's move to the exceptions now. Clause 3. Again, clause 3 तमरो कौन कहूची? जदि पार्लियामेंट एमिति किछि लॉ बनौची जोटा स्टेट को पावर दबो
again to make special provision with regards to residence. State নহলে the higher authority माने any authority जे recruit करूची job पाई तो जदि एमिति किछि law अछि एमिति किछि लॉ अछि जोटा स्टेट को अलाउ करूची माने गोटे नोटिफिकेशन रे जदि आसुची कि स्टेट और द हायर अथॉरिटी हैज बीन अलाउड कि जदि तुम चाहूच रेसिडेंस रो बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन करि पारिबो केतटा जॉब्स रे थाए कि से माने प्रिफर करंती कि जदि लोकल लोक थिबे कि जदि पाखा पाखी एरिया रो लोक थिबे सेठी रहू थिबे ताहले सेटा हेल्पफुल हबो तो से बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन करा हेई पारिबो ओके नाउ क्लॉज 4 क्लॉज 4 कहूची स्टेट पाखरे पावर अच्छी टू मेक स्पेशल प्रोविजंस with regards to reservations in appointment of jobs for SCBC, OBC, SCs और STs तो स्टेट चाहिए कि जॉब्स रे माने गोटे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रखी पारिबो फॉर दीज पीपल से परसेंटा केते दैट इज 50% ऑफ रिजर्वेशन माने जेते कि सपोज जदि 10टा वैकेंसी बाहरी ची तो 5टा वैकेंसी एमानक पई रिजर्वड हे कि रहिबो गोटे जॉब रे सेटा स्टेट करि पारिबो इफ condition required if the state feels कि these people जो lower caste माने अच्छंती SCBC की OBCs SCs ST जोड़ा भी if they are not adequately represented in the public services जदि स्टेट को लगिला कि एमाने ठीक रे रिप्रेजेंट हेई पारुना माने सपोज जदि गोटे जगार गोटे जॉब रे ए कैटेगरी माने नाहंती ही टोटल कि एमान को मिलुनी जॉब तो जदि स्टेट को लगिला कि दीस पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर चांसेस कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज तो स्टेट सेते बेले अपॉइंटमेंट ऑफ जॉब्स रे 50% रिजर्वेशन लगे पारिबो for these particular people. This is clause 4. Now, clause 4A. Clause 4A अच्छी 4B भी अच्छी जोड़ा आगो नथिला बट तापरे अमेंडमेंट रे ऐड करा है जे कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा हमें अमेंडमेंट क्लास रे पढिबा कि को ईयर रे केबे ऐड हैला बट clause 4A ऐड करा हला कोन पई What does clause 4A speak? ना कि reservation फर्स्ट रे हमें पढ़िले clause 4 रे appointment रे reservation state करि परिबो 4A कहूची state चाहिए promotion रे भी reservation करि परिबो in matters of promotion कहा पई SCBC, SC, ST. This is not applicable to OBCs. Other backward classes पे एटा नहीं. एटा खाली SCBC, SCs और ST पे अच्छी promotion. Okay? Reservation in matters of promotion करे पारिबो state. And आउ गोटे word अच्छी clause 4A रे consequential seniority. What is consequential seniority?
सपोज मु कहूँ एटा कौन पर्सन ए अच्छी पर्सन बी अच्छी पर्सन ए हूँ तुमर जनरल कैटेगरी पर्सन बी हूँ गोटे एससी तो एबे पर्सन ए सीनियर अच्छी ओके पर्सन बी जूनियर अच्छी बट जिते बड़े रिजर्वेशन प्रमोशन होची आ पर्सन बी रो आग प्रमोशन हे गला ड्यू टू रिजर्वेशन बिकॉज से गोटे एससी तो प्रमोशन पर this person will become the senior of this person b senior हे जीवो एठो consequential seniority माने because of the promotion कौन consequence हबो the consequence of such promotion due to reservation will make a junior person senior to the person promoted later जनरल कैटेगरी लोकोटा पर प्रमोट हम तो सी आउ सीनियर रहिबनी ऑब्वियसली जी आग प्रमोट हैला सी सीनियर हे जिवो तो दिस पर्सन विल बिकम द सीनियर ऑफ दिस पर्सन एटा होची तमरो क्लॉज 4A आई होप एटा बुझा पड़ला नेक्स्ट clause 4B clause 4B गोटे रूल दौची सिंपली carry forward rule what do you mean by carry forward rule अच्छा एबे अपॉइंटमेंट्स रे जो 50% वैकेंसी रिजर्वेशन रे निया हेथिला लोअर क्लास पाई सपोज 10टा वैकेंसी बाहरी थिला सेथरो 5टा 50% रिजर्व करा हे जाईची ओके नाउ 5टा रु खाली 3टा फिल्ड हैला आउ 2टा वेकेंट रही गला एबे भी सेटा फिल हैलानी एटा रिजर्वेशन रो सीट्स मु कोची रिजर्वेशन रे 2टा सीट फिल हैलानी 3टा ही सीट फिल हैला 2टा सीट हैलानी से 2टा को हमें कोन करिबा कैरी फॉरवर्ड करिबा टू नेक्स्ट ईयर माने जदी 2021 रे 2टा सीट वेकेंट रही गला 2022 रे जदी आउ 5टा वैकेंसी बाहरी ची तो एटा भी ऐड हे जिवो आउ टोटल 7 सीट्स हे जिवो ओके सो द वेकेंट सीट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बट केते वर्ष जाय मैं कैरी फॉरवर्ड करि परिबा माने सपोज यदि फिल ही होनी तो this is applicable until 3 years माने सपोज ए 2टा सीट 2022 रे भी फिल हैलानी 2023 हे गला सॉरी 2021 ओके 2021 रे भी जदी ये फिल होनी एठी भी ए 2टा सीट वेकेंट रही गला तो 2022 रे आफ्टर 3 इयर्स नुआ वैकेंसीज जोड़ा आसीबो फ्रेश वैकेंसीज रिजर्वेशन वैकेंसी नाही जनरली जो टोटल मु कहउतली 10टा वैकेंसी जदी बाहर होची ए 2टा सेई थिरे ऐड हे जीवो समस्त अंक पेडा रिजर्वेशन रे रही बनी जदी 3 वर्ष जाई से वैकेंसी फिल हेलानी तो ताकू आफ्टर 3 इयर्स फ्रेश नुआ वैकेंसी रे इंक्लूड करा हे जीवो से रिजर्वेशन रे रही बनी तो गोटे वर्ष रे जदी रिजर्वेशन फिल होनी ताको हमें कैरी फॉरवर्ड करि परिबा अप टू नेक्स्ट ईयर बट ओनली अंटिल 3 इयर्स हमें कैरी फॉरवर्ड ता करि परिबा ओके नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज
5 क्लॉज 5 तमर कौन कहूची सपोज गोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूट अच्छी ट्रस्ट अच्छी जहाँ भी ओके सेतेबेले डिस्क्रिमिनेशन करा है पारिबो ना को बेसिस रे केमिति द ड्यूटी ऑफ सच रिलीजियस इंस्टीट्यूट टू बी हैंडल्ड बाय अ पर्सन फॉलोइंग a particular religion for example a temple has to be headed by a priest who is of Hindu religion or a masjid has to be headed by a Muslim and a church by a Christian and etc. तो जिते बड़े गोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूट विषय में कथा होचु तार ड्यूटी या तार हेड हबा पाई से he should be following a particular religion जेमिति a temple पाई से गोटे हिंदू हेतिबा दरकार मस्जिद पाई मुस्लिम हेतिबा दरकार चर्च पाई क्रिश्चियन हेतिबा दरकार ओके सिंपल लास्ट क्लॉज 6 अगेन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हे गला एबे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पाई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट 10% इन एक्सेस ऑफ द 50% तो सेडा 50% थिला एडा एक्स्ट्रा 10% ओके so this was all about your article 16 मु आउ थरे शॉर्ट रे article 16 लिखि दउछि बिकॉज़ मझिरे टिके ग्लिच हे जाइतला क्लॉज 1 तमरो कहूछि no discrimination or equal opportunity for services under the state ओके क्लॉज 2 तमरो 7टा ग्राउंड दउछि कि को बेसिस रे तमे डिस्क्रिमिनेशन करि पारिबनी क्लॉज 3 तमरो एक्सेप्शन स्टार्ट होउछि कि रेसिडेंस बेसिस रे स्टेट चाहिले जदि लॉ पार्लियामेंट दउछि राइट दउछि स्टेट को तो रेसिडेंस बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन हेई पारिबो ओके क्लॉज 4 कहूछि reservation in matters of appointment जोटा कि 50% SCBC OBC SC ST समस्त पाइडा 4A कहूछि reservation in matters of promotion जोड़ा कि ओबीसी पाई नाही सेटा एससीबीसी एससीज और एसटीज पाई अछि विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी कि जदि रिजर्वेशन जोगु प्रमोशन होउछि कहले सीए सीनियर हे जीवो ओके this is clause 1 2 3 4 and 4A I hope eta bujha padila if you want to take a screenshot and then I will continue with 4B 5 and 6 okay
4B says carry forward rule. In reservation up to 3 years. Clause 5 कौची religious institution कथा religious institution or the duty of religious institution ପାଇଁ ଗୋଟେ particular religion necessary. And finally clause 6 EWS कथा कौची economically weaker section by reservation which is 10%. Okay, I hope you have understood article 16 clause 1 to clause 6 eta thila tamara article 16. Let's move on to article 17. Article 17 hochi tamara abolition of untouchability. Simply article 17 कहुची कि there should not be untouchability माने कास्ट बेस रे कि जहाँ भी कहा को भी अनटचेबल कही पारिबनी होतला ना लाइक पुराना काल रे बहुत आगरो कि जदि कहा लोअर कास्ट अछि गोटे पर्टिकुलर कैटेगरी को गोटे लोक बिलोंग करूची तो ताको लोक छू नथले कि माने कहा घरे से एंटर करि पारिबेनी एक्सेट्रा जहाँ भी प्रैक्टिसेस होतुला तो दैट is to be prohibited. तो article 17 simply कहूची prohibition of untouchability because जदि तमे untouchability follow करिवो माने obviously that will violate your article 14. article 14 कहूची equality तो जदि तमे untouchability follow करू तो तमे article 14 violate करूछ से मनीषर कि that person also has the fundamental right of article 14 as a citizen of India. So that is why if you are violating article 14 or you are following untouchability, that is a punishable offense. Okay, जदि untouchability जदि तुम follow करूछ गोटे मनीष को जदि तुम सेमते फील करूछ he will be disabled in the sense not physically but mentally helplessness. ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ତମେ କରୁଛ that is a punishable offense under the law. Okay, now article 17 रे गोटे केस हेतला द सबरीमाला केस सेटा हम जड़े लैंडमार्क केसेस पढिबा हम से केस भी पढिबा बट आफ्टर दैट केस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जे हमर चीफ जस्टिस थिले द प्रीवियस चीफ जस्टिस सीए गोटे नुआ इंटरप्रिटेशन देथिले ना कोन खाली कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी विषय में आर्टिकल 17 रे कथा होनु हम आर्टिकल 17 रे ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी विषय कथा होजो ना इवन द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड विथ विमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन that is also the violation of article 14. Obviously या विषय रे किछि भी पर्यंत लॉ आसीनी कि दिस इज लाइक सेमती फॉर्मली एटा ऐड हेनी बट ही गेव अ न्यू व्यू टू दिस कि जजेस माने सब केस रे आज पर्यंत इंटरप्रेट जोड़ा करूथुले आर्टिकल 17 को दिस वाज ओनली कास्ट बेस्ड बट वेयर सेटा खाली कास्ट बेस्ड नाही सेटा ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इंक्लूड करूची तो इवन द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस विथ वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सेटा भी आर्टिकल 17 रे आसीबा कथा. ओके, दिस वाज योर आर्टिकल 17.
Last but not the least, obviously, Article 18 is your abolition of titles. Article 18 clause 1 says gote moniଷ gote title केतेबेले hold करि परिबो only if it is military title or academic title. Military or academic title like major, colonel, or academically doctor, professor, ए सबु टाइटल्स ही गोटे लोक होल्ड करि पारिबो. आगुरु जो टाइटल गुडा थिला सर या राजा साहब से सबु माने चलिबनी से that those titles are abolished because again article 14 equality before law कि जणो को एमती सर कहि कि राजा साहब कहि कि nobody is superior before the law तो हमें से टाइटल्स यूज करि परिबानी बट हमें को टाइटल्स यूज करिबा when it is a military title or an academic title because सेटा गोटे मनीष को तार टैलेंट पई तार काम पई मिलुची तो से टाइटल्स यूज हे परिबो. नेक्स्ट क्लॉज 2 कहूची नो सिटीजन ऑफ इंडिया जदि गोटे मनीष इंडिया रो सिटीजन ही शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन टाइटल माने को भी फॉरेन कंट्री रो किछि टाइटल एक्सेप्ट करि पारिबनी. इंडिया रो गोटे सिटीजन गोटे फॉरेन कंट्री रो टाइटल एक्सेप्ट करि पारिबनी. ओके क्लॉज 3 कहूची इवन इफ a person is not a citizen of India जदि भी गोटे मनीष गोटे सिटीजन नाही इंडिया रो बट he is holding the office of profit माने तार किछि बिजनेस अछि इंडिया रे गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सी होल्ड करूची इंडिया रे then also he cannot खाली कीवर्ड्स लिखि दोची I hope you understand this cannot accept foreign titles without the consent of the president of India. एटा टिके बुझिया पे चेष्टा करो कि जदि गोटे मनीष क्लॉज 2 रे हमें पढ़िले कि जदि गोटे मनीष इंडिया सिटीजन तो सी फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करि ही परिबनी बट क्लॉज 3 कहूची जदि गोटे मनीष सिटीजन नाही इंडिया रे सिटीजन नाही से गोटे बाहर रो सिटीजन बट स्टिल इंडिया रे से गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करूची किछि बिजनेस करूची देन आल्सो प्रेसिडेंट रो कंसेंट कि प्रेसिडेंट रो परमिशन न नहीं सी किछि भी फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट करि पारिबनी. Even a person who is not a citizen of India but से office of profit hold करूची still से करि पारिबनी foreign title accept करि पारिबनी. Okay, last clause 4 of article 18 states कि such a person माने same एटा ही कहूची जोटा clause 3 रे मेंशन अछि कि a person who is not a citizen of India but India रे office of profit hold करूची also cannot accept title तो accept करि परिबनी president रो consent बिना but किछि present gift
कि emolument consideration, return, gift, present, जोड़ा भी whatever. This is emolument. EMOLUMENT. Okay, emolument माने return and whatever consideration return. Again, एटा भी accept करी पारिबनी without the consent of the president. तो गोटे पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया तो ना ही से फॉरेन टाइटल और ना ही किसी प्रेजेंट एक्सेप्ट करि पारिबो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, दिस वाज योर आर्टिकल 18. मोटा भी कही दउची सबु जगह क्लॉज 1 कि खाली मिलिटरी कि अकेडमिक टाइटल्स अलाउड अच्छी फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. 2 foreign titles cannot be accepted by a citizen. 'एटा सिटीजन पाई हाँ इंडियन सिटीजन पाई. क्लॉज 3 नॉट अ सिटीजन but holding office of profit in India. So needs the consent of the president of India to accept a foreign title. Clause 4 कोचे same again, not a citizen of India but holding office cannot accept presents etc. foreign presence and emolument etc. again without the consent of the president. Okay. So this is your article 18, abolition of titles. So I hope you have understood everything about the right to equality under the Constitution of India, that is your article 14 to 18. So these were your fundamental rights for equality. तो एटा हमें पार्ट 1 रे हे गला. हमें पार्ट 2 रे कौन पढ़िबा राइट्स with regards to freedom जोटा कि तमरा आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 अछि सेटा हमें नेक्स्ट पार्ट रे पढ़िबा. So thank you for your patient hearing and let's meet again in the next video.